आप बोलिए, आप अपनी बात आ जाओ अभी। You can't physically mob a person like this. You can't physically mob a person like this. हाँ, ले आइए। आपको और कोई माइक रखना है? All of my conversations. After this, I am not going to give any individual bite. Please take the statement and go. Don't physically mob me. Please, this is not done. No one is doing that. I have given. I am just going to repeat my statement that all of my conversations are based on authentic conversations with people who have come from Kashmir. I have given a lot of statements. I have not just given one statement. I have said that LPG cylinders are running out. Why are you not offended about it? उसके बारे में भी मुझे पूछिए। लोगों के पास कुकिंग गैस नहीं है अभी कश्मीर में। वहाँ पे गैस एजेंसियाँ ठप है। मैंने ये भी लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज रिव्यू कर रही है, उस पे किसी को ऑफेंस नहीं हुआ, उस पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नहीं एक सेकंड, लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट। नहीं आप मुझे फिनिश करने दीजिए। लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट। I have said whatever I have said based on authentic conversations with people who have absolutely no reason to lie, and I request the Indian Army that because they have reacted to my statement, I am a very ordinary citizen. One of the largest armies of the world has reacted to my statement. Let the Indian Army conduct an inquiry into the incidents that I have mentioned. I will depose before them. I will give them the particulars of the incidents where this has happened. Let them initiate an inquiry. And if the people are found guilty, if what I'm saying is found to be true, then the Indian Army should give us an assurance that people will actually be punished, because we saw in Ranjan Gogoi's case, there was evidence that the Army's own SOPs were violated. But there was no. I will give the Aadhaar to the Indian Army when they initiate an inquiry. I think they have not told the tweets to the Indian Army. Let them initiate an inquiry. I have given my statement. Thank you very much. I request you to disperse. Do you have any proof? I request you to disperse peacefully. Because I have was it not very convenient for you to come out and tweet? Sir, you are not the Indian Army. Madam, but are you the Indian Army? What evidence did you have, madam? I did not have any evidence. You did not have any proof. You just tweeted about it. Is that what you're saying? आप सोशल मीडिया पे एविडेंस क्यों नहीं देते? वही बोल रही हूँ ना कि आर्मी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। Tweet something out like this. Isn't it giving a wrong message? नहीं, मैडम आप मुझे बताइए, आर्मी को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने दें, मैं दे दूंगी अपना एविडेंस जो मुझे देना है। मैं आपको क्यों दूं? आपने नहीं इजाजत है, मोदी जी ने बैन कर दिया है ट्वीट करना। मैडम आप मोदी जी के राज में इजाजत नहीं है ट्वीट करना, क्यों नहीं? आपको बिल्कुल आजादी है ट्वीट करने की, लेकिन आपको इस चीज की आजादी नहीं है कि आप रूमर मॉन्गरिंग करें। आप मैडम कहीं ना आप कश्मीर जाइए, वहाँ पे रिपोर्ट कीजिए। मैडम लगातार मैडम यू कैन होल्ड माय माइक इफ यू वांट। मैडम वी आर कॉन्फिडेंटली रिपोर्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड राइट नाउ एट द मोमेंट, बट इट डज नॉट क्वालिफाई फॉर रूमर मॉन्गरिंग। मैडम डज इट नॉट क्वालिफाई फॉर मेडिकल इमरजेंसी। आपको मेरा इंटरव्यू लेना है तो ट्वीट करने पे बैन है। मैडम बिल्कुल नहीं है, लेकिन रूमर मॉन्गरिंग मैडम इज I stand by my statements. I stand by my statements. I have made my statements. We have truth on our side. Are you saying that there was torture happening and there were mics put on? Yes. Madam, are you saying that? There is torture happening. Madam, how is it human rights violations happening? What do you think the government is doing? Madam, the government is doing? आप सरकार के स्पोक्सपर्सन बनेंगे तो आप बनिए। I am not a government spokesperson. Madam, of course you're not a government spokesperson. मैं तो बीजेपी की लाइन नहीं बोलूँगी ना। मैडम आप जाओ, आप बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठो, पोस्ट ले लो, इलेक्शन कंटेस्ट करो बीजेपी।